Assalamu alaikum all and welcome back. We are going to continue our lecture on the economic analysis of financial structures. In the previous lecture, we discussed the basic facts about financial structure. Now we are going towards the reasons that why these facts occur. One of the primary reasons is the transaction cost. Then there is the problem of asymmetric information. Then there is the problem of adverse selection and moral hazard, the lemon problem. All these four and five issues, they makes the financial structure as it is. We'll discuss all these issues in detail and we will discuss their impact on the financial structure and how they affect the economy in general. How we'll discuss that how can we improve the financial structure and minimize the transaction cost and asymmetric information and other problems in order to get a efficient financial system. You can study more about these topics from the chapter 8 of the Economics of Money, Banking and Financial Markets by Frederick Mishkin. So, before moving forward, discussing why these facts are as it is or why these 8 puzzles exist in the financial structure, let me remind you all of the list of the facts that we studied in the previous lecture. So, first of all, again, stocks are not the most important source of external financing. Neither are the marketable securities. In fact, indirect financing, which includes bank and non-bank loan, is way more important than the direct financing. And banks are the most important source for external finance. It means if you want to improve the financial structure, you should start with the banks. If the banks are improved, the financial structure as a whole will improve. And it's not that financial system is not regulated, it's one of the heavily regulated sectors in the economy. The sixth is that only large and well-established firms have access to securities markets and collateral is present in debt contracts, and it's very important for managing the debt and preserving the rights. And debt contracts are very large legal documents. They are not a simple IOU document. So this was the list of facts that we discussed in the previous lecture. Now we are going to study how these exist and what are the reasons behind. So one of the biggest issue in financial markets is the transaction cost. Transaction costs are a major problem in financial market and transaction costs are too high for the ordinary people. Why this happened is अच्छा ट्रांजैक्शन कोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा प्रोमिनेंट है इकोनॉमिक्स में आपने बहुत और जगहों पे भी पढ़ा होगा इनफैक्ट मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी जब हम बार्टर सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ बार्टर सिस्टम वाज दैट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर वेरी हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती क्या है कि अगर आपने कोई भी एक्सचेंज करना है किसी भी किस्म का एक्सचेंज करना है तो उस एक्सचेंज में हिस्सा लेने के लिए आपको जो कॉस्ट देनी पड़ती है दैट इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये मनी की फॉर्म में भी होती है और नॉन मॉनिटरी फॉर्म में भी होती है इन मॉनिटरी फॉर्म इट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी and in the non-monetary way it is in the form of your efforts the work you will have to do. अब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम में खासतौर पर स्टॉक मार्केट्स में वो इंडिविजुअल्स के लिए बहुत हाई होती है और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत हाई होती है हाई इस तरह से नहीं होती कि अगर आप जो है वो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ब्रोकेज फी वगैरह पे करनी पड़ेगी इट्स हाई इन अ सेंस कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका एक मेजर पोर्शन स्टॉक इसका एक मेजर पोर्शन जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की फॉर्म में जाएगा एज कम्पेयर टू दैट इफ यू आर गोइंग टू इफ यू आर डूइंग अ लार्जर इन्वेस्टमेंट उसके केस में आपकी जो है वो कम हिस्सा होता इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं यू हैव ओनली $5,000 एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट अब स्टॉक मार्केट पे जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यू विल हैव टू पे बैक सम ब्रोकेज फी सपोज लेट्स assume that the brokerage fee is $500
तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 10% आपको ब्रोकेज फी की फॉर्म में देना पड़ेगा। ब्रोकेज फी इज सेम, अगर आपको जो है वो 5000 की बजाय 500,000 की इन्वेस्टमेंट करें तो फिर ब्रोकेज फी जो है 500 वो तो कुछ भी नहीं रहेगी, उसकी परसेंटेज तो बहुत कम हो जाएगी। तो being a small investor it's difficult for you, and therefore it's not suggestible. Let me remind you all of the facts जो हमने पढ़ा कि only जो लार्ज कॉरपोरेशन हैं वो वर्क करती हैं ज़्यादा एफिशिएंटली, वो इसीलिए करती हैं कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्वाइव करना ही मुश्किल होता है, उन्हें हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ती है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में तो ये हो गया। अगर आप बॉन्ड्स मार्केट की तरफ जाओ तो फिर क्या सिचुएशन होगी? इन द केस ऑफ bonds market, you can only get the smallest from denomination of for bonds, because in the limited money आपके पास डाइवर्सिफिकेशन की ऑप्शन भी नहीं होगी, आप सिर्फ एक ही तरह की जो है वो बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो, और अगर कोई नुकसान होगा तो आपकी सारी की सारी सेविंग जो है वो ज़ाया हो जाएगी। आप सब जो है उस प्रोवर्ब से जाको सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, दैट पुट योर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इफ यू हैव स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइक 5,000 10,000, उसके केस में आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक ही जगह में कर सकोगे, और उसका नुकसान ये होगा दैट यू हैव पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड इफ समथिंग वाज हैपन टू दैट बास्केट, all your eggs will be ruined, or all your life savings will be ruined. So in this way, बहुत कम जो हाउस होल्ड हैं वो कोई सिक्योरिटी ऑन करते हैं या स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। So what can we do to help the small investors? इस सिलसिले में जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, बैंक्स वगैरह या जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। वो जो स्मॉल सेवर्स और बोरोअर्स हैं उनको फाइनेंशियल मार्केट से बेनिफिट हासिल करने में हेल्प करती हैं। What they do is they take out the funds of bunch of investors and they pool them together, and then they invest it in some equities or securities. वही कि अगर 5,000 आपके पास है, 5,000 दूसरे के पास है, 10,000 एक तीसरे स्मॉल इन्वेस्टर के पास है, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप तीनों जो है वो सेपरेटली ये कुछ खरीदें और सेपरेटली तीनों जो है वो ब्रोकेज फी देंगे, आप तीनों के अगर फंड्स जो हैं वो मिला दिए जाएं और आप इकट्ठे 20,000 की इन्वेस्टमेंट करो, तो एक तो ये कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ऑन एवरेज कम हो जाएगी, दूसरा ये कि आप जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। And this is what financial intermediaries do. They play their role and they collect the funds of many investors together, उससे यही उतनी सेविंग्स हो जाती है कि वो उसको इजीली कहीं पे भी इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। This phenomena is known as economies of scale. Economies of scale भी एक बड़े well known term है। Economies of scale simply means the reduction in the transaction cost per unit as the size of transaction increases. आप जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे उतना ही जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पोर्शन है या पर यूनिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपको कम से कम होती जाएगी। यही इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हेल्प अस गेटिंग देयर। The presence of economies of scale in the financial market helps explain why financial intermediaries development became such an important part of financial structure. Again, ये वही बेसिक जो हमने 4 फैक्ट्स पढ़े थे या 4 पजल, सॉरी 4 नहीं 8 बेसिक फैक्ट्स या पजल्स थी हमारे पास। This will help you understand that why stocks are not the major source of external financing. क्योंकि हर इन्वेस्टर जो है वो उसको रीच नहीं कर पाता और हर सेवर जो है वो उसको रीच नहीं कर पाता, इसीलिए मोस्ट लोग जो हैं वो बैंक लोन को प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बैंक लोन ऑन द अदर हैंड दे हैव लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज कंपेयर टू दी सिक्योरिटीज एंड इक्विटी मार्केट।
There is another benefit of the presence of economies of scale, that is in an investment. If the investment is large enough to purchase the widely diversified portfolio of securities, वही जो दूसरा मसला था कि you won't have, in the presence of economies of scale, you won't have to put all your eggs in one basket. आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप मुख्तलिफ एसेट्स परचेज कर सकते हो और डिफरेंट एसेट्स जो हैं वो डिफरेंट रिटर्न देते हैं, और अगर किसी एक एसेट में कोई मसला भी निकल आता है तो आपकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगी. The increased diversification for the individual investor reduce their risk and making them better off. यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का. आप दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट 101. इन्वेस्टमेंट का बेसिक प्रिंसिपल यही है दैट इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन समथिंग, ऑलवेज डाइवर्सिफाई. लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होती है. उसके लिए फिर बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जो 4-5 स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो मिलके अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपने फंड्स हैं उनको पूल करें और उसके बाद वो किसी न किसी स्कीम का पार्ट बने. Financial intermediaries are also better able to develop expertise to lower transaction costs. ये भी एक financial intermediaries का बहुत important role है. They have better expertise and they can help in reducing the transaction cost. They also make it easier to conduct transactions. Financial intermediaries जो हैं वो बहुत important है. So बैक टू द क्वेश्चन, हमारा मेन गोल किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का यही होता है कि वो किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का यही होता है कि वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इतना एफिशिएंट बना सके कि उसकी जो सेविंग्स हैं वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू इन्वेस्टर्स तक पहुंचे और जो एवरेज रेट है सेविंग का भी और इन्वेस्टमेंट का भी उसको बढ़ाया जा सके. In this scenario, the financial intermediaries are the most important tool that the government have. If you have improved your financial intermediaries, you can work on improving the other sectors as well. In fact, those financial intermediaries will help you improving the financial system as a whole. The second problem that occurs in the financial system is the asymmetric information problem. Asymmetric information क्या होती है? Symmetric means same. Asymmetric information is that situation जिसमें दो पार्टीज हैं, तो एक पार्टी को ज्यादा पता है, दूसरी पार्टी को उस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं. ये भी हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जब होती है तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन करते हुए, यानी कि कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हुए कि आपने कोई सिक्योरिटी परचेज करें या ना करें, कोई बॉन्ड्स परचेज करें या ना करें, इफ यू डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू कांट मेक अ रैशनल डिसीजन. फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि जी एक कंपनी है, इसके स्टॉक्स बड़े सेफ हैं, आपने उनकी न्यूज़ में जस्ट सुना कि भी इसके रेवेन्यू बहुत बढ़ गए हैं, सो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी. But in reality, that company wasn't doing that good. In that case, आपको डिविडेंड प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी. और वो क्यों हुआ था? क्योंकि आपको उस कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता था. You had a asymmetric information regarding that situation. The presence of asymmetric information leads to the two other problems as well. The first one is the adverse selection and the second one is moral hazard problem. एडवर्स सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इस तरह से इफेक्ट करती है, इसको हम लेमन प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. लेमन प्रॉब्लम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. सबसे पहले मैं आपको लेमन प्रॉब्लम का बता देती हूँ, फिर ये बताऊंगी कि एडवर्स सिलेक्शन जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को किस तरह से इम्पैक्ट करती है. लेमन प्रॉब्लम बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये बड़ी कॉमनली यूज्ड एग्जांपल होती है कि अगर आपने सेकंड हैंड कार परचेज करनी है तो आपको नहीं पता कि जो गाड़ी आप ले रहे हैं वो अच्छी है, वो वाकई ही अच्छी है,
या वो एक लेमन की तरह, लेमन की तरह किस तरह से कि वो हर 2-4 दिन के बाद जो है वो खराब होती रहेगी और आपको बार बार उस पे जो है वो पैसे लगाने पड़ेंगे। इसको कहते हैं वो गाड़ी जिसकी क्वालिटी अच्छी ना निकले, सेकंड हैंड कार, उसको हम लेमन बोलेंगे, और जो बाकी हैं उसको हम अच्छी द गुड कार बोलेंगे। सो लेमन प्रॉब्लम यही होती है कि बीइंग अ बायर यू डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, आपके पास उतनी ही नॉलेज है उस कार के बारे में जितनी बेचने वाले ने आपको बता दी। You are not sure about the quality of the car. What you can do is you can hire a mechanic to go along with you and check the basics of the car, that if it's working good or not. But still, जब तक आप खुद उसको यूज नहीं करेंगे आपको उसके मसलों का नहीं पता चलेगा। Same lemon problem also exists in the financial structure as well. अच्छा, अब उस लेमन प्रॉब्लम की वजह से इम्प्लीकेशन उसकी पता क्या? अब आप जो हो, बीइंग अ बायर, आप एक एवरेज पे करोगे। देयर इज अ पेमेंट ऑफ अ लेमन, सपोज जो खराब कार है, वो कार जो कि प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही, उसकी अगर एवरेज प्राइस जो है वो 5000 के करीब है, $5000 के करीब है, और जो अच्छी कार है सेकेंड हैंड मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो $8000 के करीब है, तो बीइंग अ buyer you are not sure that either it's worth 8000 or the 5000 of your income। अब आप कम से कम 5000 की तरफ ही उसको लेके जाओगे, because you don't have complete information, you don't have any assurity that it's not a lemon, it's a good car। अब उसमें होता यह है कि आप जो है वो एक एवरेज प्राइस ही पे करने को तैयार होते हो। अगर तो वो कार अच्छी है, सपोज उसकी वाकई ही जो वैल्यू है वो 8000 थी, लेकिन आपने ऑन एवरेज सिचुएशन को देखते हुए उसको कहा भी मैं 6000 ही दूंगा, यू गेट अ बेटर डील, you get the car worth $8000 in only $6000। On the other hand, if that car is actually a lemon, तो आपने वो 5000 वाली चीज की बजाय 6000 दे दी, तो एक केस में जो खरीदने वाला है वो नुकसान में जाएगा, दूसरे केस में जो बेचने वाला है वो नुकसान में जाएगा। ये हमारे पास लेमन प्रॉब्लम होती है। जो लेमन प्रॉब्लम का वो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में भी लेके चलते हैं कि अगर आपको किसी एसेट की क्वालिटी का नहीं पता, तो आप फिर उसकी you don't know कि either the security or the stock you are going to purchase is good or not। आपके पास complete information नहीं होगी, तो फिर दो ही options हैं। The seller of the good quality item will not want to sell at the price for the average quality। आप तो average quality वाली payment ही उसको भी करोगे ना, के लिए willing होगे, because you are not sure that either it's a good stock, it's a safe asset or not। In that case, the seller of the good quality item will lose and he will be most likely not want to sell to you at the price for the average quality। And the buyer will decide not to buy at all because all that is left in the market is the poor quality item। अब आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप एवरेज से भी बिलो वाली क्वालिटी आइटम्स को खरीद सकें। This lemon problem, the adverse selection का मतलब ये होता है कि आप खराब चूज कर रहे हो। You have three options, one A, B and C। A is a good quality option, B is the average one, and C is the bad one। You are not sure about which one is which। अब तीनों की प्राइसेस जो हैं वो हर एसेट की प्राइस जो है वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी। इन दैट सिनेरियो you will ultimately you will be only willing to pay the average quality price। और एवरेज क्वालिटी प्राइस के केस में जो होता है, जो गुड क्वालिटी आइटम्स हैं उसके जो सेलर हैं वो बेचने को रेडी नहीं होते, एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ द बैड क्वालिटी।
In this case, due to adverse selection, due to sorry asymmetric problem, सबसे पहला मसला ये है कि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है. उस कंप्लीट नॉलेज की वजह से एडवर्स सिलेक्शन का इशू निकलता. Asymmetric information, it leads to the adverse selection as also the moral hazard. Moral hazard को हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी खैर एडवर्स सिलेक्शन का मसला फिर इस तरह से आएगा और वो उसमें ये है कि जो पोटेंशियल बायर है उसको नहीं पता कि गुड फर्म्स कौन सी हैं, बैड फर्म्स कौन सी है. On paper every firm is good and you don't have the actual data. आपको उनकी जो क्वालिटी है, इंटरनल क्वालिटी, उसका नहीं पता. And in this situation in the equity market, the potential buyer will only be willing to pay the price that reflects the average quality of the firm issuing securities. अगेन वही लेमन प्रॉब्लम की बेस पे आप जो है वो जब आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि गुड कौन सा बैड कौन सा, तो फिर आप एक एवरेज जो भी गुड और बैड के दरमियान वाली अमाउंट है आप वही पे करने को तैयार हो गए. And that average price is the price that lies between the value of securities from good firm and the value of those from the bad firms. Now consequence क्या होगा कि भी आपने तो एक एवरेज प्राइस अपनी बता दी कि भी मैं इससे ऊपर कीमत जो है वो देने को नहीं तैयार. Now the manager of the good firms will not accept that undervalued price which is offered by the potential buyer because उन्हें पता है, they have complete information, they have symmetric information. उन्हें पता है कि उनकी फर्म जो है वो गुड है या बैड है. अगर तो उनकी फर्म गुड है they will not accept that undervalued price. And the only firms that will be willing to sell at the price will be the bad firms क्योंकि उन्हें तो still profit हो रहा है ना. उनकी क्वालिटी से still आप हाई प्राइसेस जो है वो बता रहे हो. अब being a potential buyer, if you are only left with the option of bad firms, you will ultimately eh, decide not to spend anything on purchasing securities at all. आप जो हो वो ultimately कहोगे भाई it's not safe for me because you are not sure. अब इसी वजह से हमारे पास जो है वो फैक्ट 1 और फैक्ट 2 आता था कि why the stock market and the or the equities are not the major source of financial external finance for the businesses because they are not that efficient. उसमें ये 3-4 मसले आते हैं. सबसे पहला ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इशू आता है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इशू को अगर आप हल कर लो, you have the problem of asymmetric information in which you don't have complete information regarding the asset. जब आपको complete information ही नहीं पता होगी तो फिर आप उसके बदले में उस एसेट के बदले में एक एवरेज पेमेंट करने को तैयार हो गए बस. और फिर उस एवरेज पेमेंट का नुकसान ये आएगा कि वो फर्म्स जो कि एक्चुअल में गुड हैं वो आपको सेल करने को तैयार नहीं होंगी और यू विल बी ओनली लेफ्ट विद द बैड फर्म्स. Therefore, investing in the stock market and the securities or equity market is relatively riskier. The analysis is also same if the potential buyer consider purchasing a corporate debt instrument in the bonds market. ये सिर्फ जो कहानी है स्टॉक मार्केट तक नहीं है, बॉन्ड मार्केट में भी यही सिचुएशन होती है. Again, he will only purchase a bond if the interest rate is high enough. And the owner of the good firms are unlikely willing to borrow in this markets. और उससे फिर हमारे पास जो है वो नुकसान में जाते हैं. Now only the bad firms will be ready to borrow in this market, but the potential buyer will not be willing to buy bonds issued by them. इसमें फिर हमारे पास वही स्टॉक मार्केट वाली ही सिचुएशन आ जाती है कि जो अच्छी फर्म्स हैं वो नहीं करेंगी, उसमें बॉन्ड्स इशू नहीं करेंगी और उस चीज़ पे इतना हाई इंटरेस्ट पेमेंट करने को वो लोग विलिंग नहीं हो गए. जो बैड फॉर्म्स हैं दे आर विलिंग टू बोरो बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी सिचुएशन डाउन चल रही है. दे हैव टू गेट इन्वेस्टमेंट एट एनी कॉस्ट, तो वो हाई इंटरेस्ट देने को भी विलिंग होंगे. अब उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि कुछ ही बॉन्ड्स जो हैं वो सिर्फ सेल होंगे मार्केट में और जो अल्टीमेट जो टोटल वैल्यू है वो फिर काफ़ी कम हो जाती है. इसीलिए जो जो अच्छी फर्म्स हैं
वो स्टॉक्स की बजाय, वो बॉन्ड्स की बजाय वो बैंक से लोन लेने को प्रेफर करती हैं। और जो जो अभी इमेच्योर इन्वेस्टर हैं वो भी प्रेफर यही करते हैं, या जो हम हाउस होल्ड हैं जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग है, वो प्रेफर यही करते हैं कि वो बैंक के पास जाएं, बैंक से लोन लें इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एनी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। So this analysis discussed above explains, first of all, that why our marketable securities are not the primary source of financing, जो हमारा fact 2 था. It also partially explains that why stocks are not the most important source of financing. तो जो पहले दो fact थे, उसको हमने इस सारे analysis में बता दिया है. Let me repeat it all. ये दो facts के लिहाज से मैं चलती हूँ. Stocks और जो marketable securities है यानी कि bonds वगैरह, वो मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है। और वो क्यों नहीं है? बिकॉज द स्मॉल इन्वेस्टर्स हैव टू फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में हमारे पास जो है, स्मॉल बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज रिलेटिवली हाई। अब उसका एक सोल्यूशन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ने ये निकाला हुआ है कि वो मुख्तलिफ छोटे इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको पूल करके, उसको मिला के फिर इन्वेस्ट करते हैं ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके और जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। लेकिन अगर आप ये भी कर लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के इशू को हल भी कर लो, यू स्टिल फेस द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम में यही होता है कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि जो आप स्टॉक परचेज करना चाह रहे हो या जो बॉन्ड आप परचेज करना चाह रहे हो वो वाकई ही सेफ है या नहीं, or the firm is lying. If the firm is in that issue when you are not sure, based on the lemon problem, you will be willing to pay only an average amount. अब उस एवरेज अमाउंट पे जो गुड फर्म्स हैं वो सेल करने को तैयार नहीं होंगी, एंड यू विल बी लेफ्ट विद द बैड फर्म्स ओनली. So you will either lose your money or you will choose not to invest at all. Therefore, the marketable securities and stocks are not the primary source of financing for any for businesses. Okay, this is it for today's lecture. We'll continue this discussion and the other issues related to financial structure in the third lecture.